Hello everyone, welcome to the afternoon session. Piyush sir has joined us already. Piyush sir, can you hear me clearly? Yes, Anuj. Great sir, we can also hear you. You can take a minute to settle down and then we are good to go. It's great to see you after a long time. Long time. Yeah, definitely. So, good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon session where we are going to talk about stock options, see if we can find an option trade, and give you the quick market outlook. If we have some time, we'll take up the stock queries, share a BTSC towards the end of the session. Just an update today at 4 p.m. we have option strategies knowledge session जहाँ पे हम आपको option strategies के बारे में सिखाएंगे with our expert Mr. Arpit Beriwal, the Bank Nifty expert. So Piyush sir, we are all set. Over to you. You can start the session with the outlook and then we can move on from there. Yeah. So good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon session. So normally we used to have Sensex expiry on Friday, but now as the rules have changed and new guidelines have came in, so now we have Sensex expiry on Tuesday. So today we don't have any expiry. Being Friday, there is no Sensex expiry now. So we have Sensex expiry on Tuesday and followed by Nifty on Thursday. So Tuesday and Thursday is the expiry day for us, and Friday is a normal day wherein we can take and talk about the market outlook, stock queries and all. Yeah. So starting with Nifty, if you look at the weekly chart, Nifty overall setup looks weak. So every small bounce is being sold into. So you can see the weekly chart of the Nifty. So multiple hurdles are placed near 23,600, 23,800. So overall on a weekly chart, 23,800 is the major resistance as of now. On immediate basis, 22,800 is the major level on the downside. So if you talk about the 1 week view, so 22,800 is the support for Nifty, whereas 23,800 is the hurdle. So 1000 पॉइंट का बैंड है 22,800 से 23,800 wherein Nifty will trade going forward for the 1 week. So डेली चार्ट की अगर बात करें तो लास्ट 4 दिन से एक रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है. इमीडिएट पे 22,800 का मेजर लेवल है. इट इज कंफर्टेबली ट्रेडिंग बिलो द 200 डेमा. सो 200 डेमा इज प्लेस्ड नियर 23,800. सो निफ्टी जो है वो 23,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है, which clearly shows कि bears का complete dominance है. And अगर कोई इंडेक्स 200 डेमा के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, so it is a bearish sign for the market. And we can see as well, overall setup market का weak है, and there is a continuous selling pressure across all the sectors, wherein we can see mid cap and small cap has already tanked by almost 40-50% from the higher levels. Even the large cap stocks have declined by almost 20-25%. So yes, as of now, market is in pain. Selling pressure is visible at the higher zones or continuous selling है. Even FI का everyday selling figure is increasing, wherein they have sold shares to the tune of more than 1 lakh crore in last 2 months. So yes, there is a complete sell-off in the market as of now, and we'll wait for any bottom formation, and we must avoid bottom fishing as of now. So at current market juncture, we avoid bottom fishing because as of now bottom is not clear और कोई भी level पे stability नहीं है. So Nifty में as of now 22,800 का support है. On the upside 23,600, 23,800 is the major hurdle for Nifty, and 22,800 is a major level to watch out for on the downside. अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो there is more pain in बैंक निफ्टी as compared to Nifty, so mainly driven by the weakness in the HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank. So all the major components of Bank Nifty are looking weak. So today also you can see Nifty is down by only 80 points, whereas Bank Nifty is down by almost 700 points, which clearly shows Bank Nifty is underperforming as compared to Nifty, and it has given a breakdown below 50,000, and right now it is trading near to 48,500. So clear breakdown is visible in the Bank Nifty. So talking about the Nifty and Bank Nifty, both selling pressure is visible as of now. Setup looks weak. Banking is more weak as compared to Nifty, mainly led by the HDFC Bank and ICICI Bank. So HDFC Bank, ICICI Bank have the weightage of almost 50% in the Bank Nifty, and both the stocks are under pressure, and because of which we can see Bank Nifty has tanked by almost 3,000 points in the last 2 weeks. So Bank Nifty as of now दोनों में weakness है. Bottom fishing को avoid करना चाहिए. Slow and steady अगर 3 से 6 महीने का व्यू है तो for that purpose जो short term ideas है वो play करने चाहिए, because all the stocks are already trading at discount. So सब में flat sale है 30-40% का. So 3 से 6 महीने के व्यू के लिए ट्रेडिंग ये लेवल पे एडवाइजेबल है, और इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना चाहिए, because next day क्या होने वाला है मार्केट इज नॉट सर्टन. सो नाउ डेज वी आर सीइंग कि आज निफ्टी 200 पॉइंट्स ऊपर बंद हो रहा है, बट नेक्स्ट डे इट इज ओपनिंग गैप डाउन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फैक्टर्स. सो अनसर्टेनिटी इज देयर. सो एज ऑफ नाउ जो पोजीशन साइजिंग है उसको कम कर देना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रेडिंग बाय 100 रुपीज, 20 रुपीज पे ट्रेड करना चाहिए, और स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा रखना चाहिए बिकॉज वॉलिटिलिटी भी है. सो ये लेवल पे एज ऑफ नाउ बॉटम फिशिंग को अवॉइड करके स्लो एंड स्टडी फॉर 3 to 6 मंथ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के जाना चाहिए.
और ओनली इंटरडे ट्रेड करना चाहिए बिकॉज मार्केट्स आर नॉट सर्टेन एज ऑफ नाउ, और अभी तक वीकली चार्ट पे अगर देखें तो कोई भी रिवर्सल नहीं है. So now we are open for stock queries, Anuj. We can take the stock queries, and I like to give 1-2 trades which we have given for conviction delivery ideas. So one trade which is looking good for 3 to 5 days is UPL. So we have seen buying across the chemical space in the last 2 to 3 days. So SRF, Navin Fluorine, UPL, all the stocks are looking good. So UPL has just given a range breakout today above 555. So one can buy UPL for 3 to 5 days, keeping a stop loss of 535 for an upside target towards 580. So you can pin that. UPL is looking good for conviction delivery ideas for 3 to 5 days, keeping a stop loss of 535 and target of 580. So this is a daily chart. It has just given a breakout, range breakout, and overall setup looks good. Buying is visible across the space. So yes, risk reward looks favorable, and यहाँ से 3 से 5% के अपमूव के लिए UPL का सेटअप काफी अच्छा लग रहा है. So we can take the stock queries now, or do we have any other CDI trade? So UPL is looking good. So one trade is there. So one more trade which is looking for CDI, which we have given already 1 hour ago. So that is on National Aluminium. So you can pin that as well. Both the stocks are looking good. So Nalco, after a decline of almost 25% from the higher zones, it has just taken a support near the crucial 200 DEMA. So it is just bouncing and rebounding from the crucial 200 days moving average. And now we can see lower top, lower bottom formation is there. But today it has made open and low same. So 197 ka open and low dono same hai Nalco ka. As of now, the price is hovering near to 204. So one can keep a stop loss of 195. And on the upside, we are expecting it to test 225. So Nalco is looking good from the metal space after the sharp decline across the metal space. Now we can see in the last 2-3 days, Nalco and all the metal stocks are rebounding. So risk reward is favorable in Nalco as well. So one can buy with the support of 195 for an upside potential target towards 225. So we have given 2 trades, one from the chemical space, that is UPL, and one from the metal space, that is Nalco. So both the trades are looking good for 3 to 5% move for immediate basis. So one can buy. Sir, we on Electra Green Tech. Electra overall setup is weak. So overall setup weak है Electra का. As of now, कोई भी previous hurdle है वो surpass नहीं कर पा रहा है. So major जो अपमूव आएगा वो 1450 के ऊपर आएगा. As of now setup weak है. 1450 के ऊपर ही अच्छा अपमूव आना चाहिए. So as of now ये level पे wait and watch करना चाहिए. We have seen a upmove of almost 15% few days ago, but as of now setup में weakness है और 1450 के ऊपर इसमें नया buy करना चाहिए. So Kalyan Jewelers at 400 for long term. We have seen a sharp sell-off in the Kalyan Jewelers in the last few trading sessions, wherein the stock tanked by 800 odd levels to 500. So overall setup में weakness है. Non-stop lower as lower bottom का formation बन रहा है. Volumes भी बहुत noticeable है. So overall as of now setup looks weak और slow and steady. Falling knife को as of now catch नहीं करना चाहिए because technically कोई reversal नहीं है as of now. So wait and watch करना चाहिए और नीचे के levels पे around 470 entry लेना चाहिए. As of now setup looks weak और यहाँ से भी 5-7% के लिए stock weakness दिखा सकता है. So Fin Cable 1056 buying price. So Fin Cable भी overall weakness ही है. So as of now अगर ऊपर के लेवल से बात करें तो आज स्टॉक ने ऑलमोस्ट पूरे गेन्स दे दिए. सो एज ऑफ नाउ सेटअप लुक्स वीक. ऊपर में अगर 1100 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो ही सेटअप अच्छा रहेगा. सो ये लेवल पे भी अवॉइड करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए. और 1100 के ऊपर अगर ये सरपास करके इफ इट होल्ड्स अबव 1100 देन ओनली बाय और एल्स वेट फॉर द लोअर लेवल्स. एंड जैसे मैंने आपको बताया अनुज, ऑल द स्टॉक्स वी हैव सीन अ करेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 30-40% अक्रॉस द स्पेस. सो हर एक स्टॉक में, वेदर यू टॉक अबाउट द मिड कैप, स्मॉल कैप, एफएनओ स्टॉक, सब में ही मेजर करेक्शन है. और यहाँ पे सब के सब स्टॉक्स 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट नीचे आ गए. सो ये लेवल पे भी अभी तक बॉटम बना नहीं है स्टॉक्स में. बेटर टू वेट फॉर द क्लैरिटी और प्रॉपर रिवर्सल पे ऐड करना चाहिए. और ये लेवल पे एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच करना इज अ बेटर आइडिया. सर टीटागढ़. सो रेल PSUs we have seen a nice up move in the last 2 days. So टीटागढ़ में उतना मूव नहीं आया, but IRFC, Ircon, all the stocks have rallied by almost 10 to 15% on the hope that budget में 20% और more allocation आने वाला है for the railways. So we have seen a nice action across the rail PSU stocks in the last
2 trading sessions. So T-Target also overall setup looks weak. थोड़ा सा अप मूव आया लास्ट 2 दिन में, but wait for it to surpass 1150. So in the falling market, we'll watch out for the resistance to get surpassed rather than watching for the supports. So ये level पे as of now 1150 के ऊपर अगर closing आता है तो ये setup में change रहेगा, or else selling will continue. So 1150 के ऊपर ही buy करना चाहिए. Yes, Anuj. Sir, I was speaking on mute. We own private banks. तो निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, वी हैव सीन मेजर करेक्शन. जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में वीकनेस है. सो दैट वीकनेस इज मेनली लेड बाय द प्राइवेट बैंक्स बिकॉज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बैंकिंग स्टॉक, बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट्स है दैट इज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक. सो ये दो का मेजर वेटेज है, दोनों प्राइवेट बैंक से ही है. सो प्राइवेट बैंक्स में ओवरऑल वीकनेस है. जो नंबर्स आए थे कल एक्सिस बैंक के वो भी इतने प्रॉमिसिंग नहीं थे. सो टेक्निकली भी सेटअप में वीकनेस है. 200 डेमा के बहुत ही नीचे आ गया है. लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है, और जो स्विंग लो था 3 दिन पहले का वो भी ऑलमोस्ट आज ब्रीच हो गया है. सो एज ऑफ नाउ प्राइवेट बैंक्स में वीकनेस है. बेटर टू वेट एंड वॉच. और एज ऑफ नाउ ये लेवल पे ऐड नहीं करना चाहिए. थोड़ा और 5 से 7% का डाउनफॉल दिख सकता है इसमें. सो एचडीएफसी, आईसीआईसी, ऑल द स्टॉक्स अगर मैं एक एक करके इफ आई वॉच आउट फॉर एचडीएफसी बैंक, सो यू कैन सी क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन इज देयर. 200 डेमा के भी नीचे है. कंपैरेटिवली आईसीआईसी बैंक इज होल्डिंग. अगर आईसीआईसी बैंक कंपैरेटिवली होल्ड कर रहा है एज कंपेयर टू अदर बैंकिंग स्टॉक्स, बट ये लेवल पे भी वेट करना चाहिए बिकॉज प्राइवेट बैंक्स में ओवरऑल सेलिंग प्रेशर इज देयर. अगर कोई थीम अच्छा लग रहा है अनुज फॉर अपकमिंग 2 to 3 वीक्स या बजट के रिलेटेड, तो एक फर्टिलाइजर स्पेस रहेगा वेर इन बजट के लिए फर्टिलाइजर स्पेस में अच्छा एक्शन रहता है. सो फैक्ट, आरसीएफ और इस सब पे फोकस करना चाहिए. एंड एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी थीम इज लुकिंग गुड. सो वी हैव सीन कंटिन्यूअस एक्शन अक्रॉस द एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी थीम, whether you talk about the BSC, MCX, CDSL, Canes, all the stocks are looking good. So exchange and depository का थीम जो है वो अच्छा लग रहा है for upcoming days. So वो एक थीम है जहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन है and all the stocks are holding gains in spite of the broader market weakness. So अगर कोई थीम प्ले करना है for 2-4 weeks, so एक exchange और डिपॉजिटरी का थीम रहेगा. और बजट रिलेटेड अगर कोई थीम प्ले करना है तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी एक्शन में रह सकता है ahead of the budget. Sir, Hero Motors 4090 future, should I buy or not? So better to wait and watch. Avoid करना चाहिए as of now because overall setup बहुत ही weak है. हीरो मोटर का we can see clearly last 6 वीक से लो राइज लो लोस बना रहा है. अगर डेली चार्ट की बात करें तो नॉन स्टॉप कोई भी every small bounce is being sold into. So technically very weak setup. So अभी भी wait and watch करना चाहिए. ऑटो स्पेस में overall weakness है. Only selective few pockets are holding well. So अगर ऑटो स्पेस की बात करें तो एक M&M है ओवरऑल जो होल्ड कर रहा था. एस्कॉर्ट्स का सेटअप अच्छा है, बट रेस्ट ऑल द स्टॉक्स निमली हीरो मोटो, बजाज ऑटो सब में वीक सेटअप है. सो ये लेवल पे वेट एंड वॉच करना चाहिए ऑटो स्पेस में बिकॉज ओवरऑल सेटअप लुक्स वीक. The view on Angel One. So better to वेट ये लेवल पे. ये अगर यही थीम में कुछ प्ले करना है तो एक्सचेंज रिलेटेड थीम में बीएससी एंड सीडीएसएल आर बेटर प्लेस्ड. सो बीएससी या सीडीएसएल में जाना चाहिए ये थीम में. एंजल वन में उतना स्ट्रेंथ नहीं है और ज्यादा स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली बीएससी एंड सीडीएसएल, एमसीएक्स ये तीनों में ज्यादा स्ट्रेंथ है. सो यस, अगर ये थीम में कुछ प्ले करना है तो वॉच आउट फॉर बीएससी, सीडीएसएल एंड एमसीएक्स. Sir, view on Infosys 60 quantity at 1920. So yesterday only Infosys came up with the Q3 numbers और numbers के बाद we have seen a gap down opening. So आज Infosys almost 6%. अगर आप आज के कैंडल को हटा दे तो till yesterday we can see Infosys एकदम lifetime high पे ट्रेड कर रहा था and the stock was on the verge of breakout. But yes, results are not in our control. So after numbers we have seen a sharp downfall of almost 6%. You can see the volume bar today. So last 10 दिन के वॉल्यूम से आज हाईएस्ट ज्यादा वॉल्यूम हुआ है. So breakdown is supported by the volume. So as of now wait and watch करना चाहिए. But yes, नीचे में strong support है overall, इसमें strength था स्टॉक में. So 1720 1740 के आसपास अच्छा सपोर्ट जोन है wherein buying can come. So वो लेवल के आसपास ही ऐड करना चाहिए नया. So numbers के बाद we have seen आज Infosys भी गैप डाउन ओपन हुआ. Even एक्सिस बैंक 5% नीचे था आफ्टर द नंबर्स जो कल आए.
So after the yesterday's number, Infosys, Axis Bank दोनों में weakness थी, wherein Reliance जो था वो 4% ऊपर open हुआ था, but as of now जो 4% वाला stock अभी 3% up है. So after the numbers, तीन major heavyweights के number थे, one from the private banks, Axis Bank, so वो 5% नीचे है, Infosys जो 5% नीचे है और Reliance जो है वो 3% ऊपर है. Sir, we on Biocon 390 call bought at 15.7. Yes, so Biocon, you can hold it because after the weakness in the pharma space in the last 2 weeks, we have seen Biocon is holding well. Or stock 52-week high pe. So yesterday only stock has given the highest daily close of last 3 months. Technically very strong setup. You can see ये जो multiple hurdles था उसको surpass किया कल about 390. Volumes are supportive. So technically very strong setup and till the time it holds about 384. So 384 spot का level consider कर सकते हैं for the stop loss option trade के लिए. So 384 के ऊपर है जब तक one can hold the call option. Overall setup looks good और बहुत ही अच्छा relative outperformance है within the pharma space in Biocon. So we on Havells for long term. So one stock Anuj, which is looking good for overnight. So we are recommending one stock for the overnight, that is PNC Infra. So on the daily chart, stock has given narrow range breakout. So overall setup weak है, but intraday charts पे अच्छा एक reversal दिखा है, एक narrow range का breakout हुआ है on the daily chart. So technically setup looks good. So right now the price is hovering near 309. So one can place a stop loss of 3. So you can pin that PNC Infra is looking good for overnight trade. So 302 is the stop loss and 325 is the target. So PNC Infra looks good for BTST. Buy today, sell tomorrow. Yes, Anuj. You are on the mute. So can you hear me? Yeah. Now We on Afcon. Afcon, okay. So Afcon is a newly listed stock. So ज़्यादा कोई historical data नहीं है, lack of historical data, but yes, multiple hurdles are visible on the higher side. So 560, 565 पे 3 से 4 बार stock surpass नहीं कर पाया, but अभी तक lack of historical data है. So 560 के ऊपर ही नया buy करना चाहिए. So if it manages to surpass and hold above 560, we can expect a quick up move. But as of now, एक रेंज में है, बट ओवरऑल सेटअप अच्छा है. जब से लिस्ट हुआ है तब से वो लोस को होल्ड कर रहा है. सो 560 के ऊपर और ऐड करना चाहिए. टेक्निकली ओवरऑल सेटअप एज ऑफ नाउ लुक्स गुड. Sir, I am holding 20 shares of HAL at 4770. Should I buy at CMP and average the cost? या ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि डिफेंस थीम में भी लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस वी हैव सीन नाइस एक्शन इन द डिफेंस थीम. सो HAL, BEL, BDL ये सब स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा है. सो मे बी ahead of the budget ये डिफेंस थीम में भी कुछ अच्छा एक्शन दिख रहा है. So yes, fertilizer space, defense theme में भी एक्शन है from last 2-3 trading sessions and we can see nice volumes as well. So yes, हेल को थोड़ा और एवरेज कर सकते हैं और we can see कि 4250 के ऊपर हेल can test 4500 levels. So 4250 के ऊपर एवरेज करना चाहिए. अब ये लेवल पे 4130 का प्राइस है. So average only above 4250. Sir, Anantraj holding 2000 quantity from 200 levels. Partial exit recommended या फिर should I buy more? So Anantraj overall setup बहुत ही strong है. You can see. So उनके प्राइस से almost 3x हो गया. स्टॉक 902 के आसपास है. So technicals तो बहुत ही strong, even fundamentally data center में बहुत ही अच्छा प्ले है. So Anantraj technically also looks good और fundamentally भी बहुत ही अच्छा प्ले है. So होल्ड रखना चाहिए इसको. स्लो एंड स्टडी ये 1200 के लिए रेडी है स्टॉक. और अगर एड पार्शियली अगर बुक करना है, so I'll tell you one level उसके नीचे इसको बुक करना चाहिए. अगर 800 के नीचे जाता है स्टॉक, then only book 50%. But as of now, you can ride it. Overall setup looks weak, and you can see कि market में इतना pain है after the correction of 30-40% in almost all the stocks. Stock is trading near lifetime high, so which shows clearly outperformance और clearly एक buying strength is visible और बहुत ही strongly hold कर रहा है stock. So overall setup बहुत ही अच्छा है, इसको hold रखना चाहिए. Sir, your view on JSW Steel? So मेटल्स में हमने देखा था नॉन स्टॉप लास्ट 2 से 3 वीक बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड था. अभी तक भी ओवरऑल वीकनेस है. 200 डेमा के नीचे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक. सो 925 के ऊपर इसको ऐड करने का सोचना चाहिए. एज ऑफ नाउ सेटअप
उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, और यही स्पेस में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, वी हैव गिवन वन ट्रेड ऑन CDI, ट्रेड ऑन नाल्को. सो नाल्को इज बेटर प्लेस. अगर आपको कुछ 3 से 5 दिन के लिए बाय करना है तो नाल्को बाय करना चाहिए, एंड इसको 925 के ऊपर ही ऐड करना चाहिए. Sir, your view on Zomato? So Zomato right now ये लेवल पे बहुत ही अच्छा बेट है. सो यू कैन सी 200 डेमा को जस्ट किस किया स्टॉक ने 3 दिन पहले. ओवरऑल सेटअप बहुत ही अच्छा था. ऑलमोस्ट 300 से स्टॉक हैज करेक्टेड टिल 230. सो रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी गुड. ये लेवल पे अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है. और जो लास्ट 4 दिन पहले का लो था, दैट इज वेरी क्रूशियल. 230 के सपोर्ट से इसको लेना चाहिए, और स्लो एंड स्टडी इट कैन अगेन टेस्ट 270 एंड देन 300 लेवल्स. सो ओवरऑल सेटअप अच्छा है, और ये जो रिसेंट डिक्लाइन है इन द स्टॉक इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. So Chola fit for short term. एज ऑफ नाउ एक रेंज में है, जस्ट वेट करना चाहिए. अभी तक ऊपर के मल्टीपल टाइम हडल है 1360 के आसपास. सो अगर इमीडिएट की बात करें तो 1330 का हडल है. सो 1330 के ऊपर ही ऐड करना चाहिए. ओवरऑल सेटअप वीक है, अभी तक कोई मीनिंगफुल सेटअप है नहीं. सो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच करना चाहिए, और 1330 के ऊपर इसको ऐड करना चाहिए. Sir, Jio Finance for long term. So Jio, I'll take the weekly chart for long term. Yes, overall breakdown दिया है स्टॉक ने. So stock has given a breakdown. So as of now जब तक 300 के ऊपर जाता नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी. बट yes, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो जस्ट जहां से अपमूव स्टार्ट हुआ था वहां से सपोर्ट लिया है 280 के आसपास. बट मोर मोमेंटम विल कम अबाउट 300. सो 300 के ऊपर ज्यादा क्लैरिटी आएगा एज ऑफ नाउ. सो एज ऑफ नाउ टेक्निकली सेटअप वीक है, और जब तक 300 के ऊपर जाता नहीं तब तक वेट करना चाहिए. Sir, your view on IREDA? सो इरिडा एज ऑफ नाउ 200 डेमो पे सपोर्ट लेके हवर कर रहा है लास्ट 4-5 दिन में एक रेंज में ही. सो यहाँ से अगर ट्रेडिंग के लिए प्ले करना है तो वन कैन प्ले फॉर 235 ऑड लेवल. सो यहाँ से 235 तक स्टॉक कैन बाउंस बैक. सो ये लेवल से अगर बाय कर रहा है तो 235 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं. Sir, Bharti HL? भारती इज कंप्लीटली आउट परफॉर्मिंग. सो भारती बहुत ही अच्छा सेटअप है. 1635 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो सेटअप बहुत ही अच्छा है. यू कैन सी अभी 1627 चल रहा है. सो इट इज गिवन अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एज यू कैन सी ऑन द चार्ट्स एज वेल. सो मार्केट के वीकनेस के बाद भी स्टॉक इज होल्डिंग गेन्स. यू कैन सी कोई भी लेवल पे सेल ऑफ नहीं है. एक रेंज जस्ट निकला है. 1635 का क्रूशियल लेवल है. अगर 1635 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो इट कैन टेस्ट द प्रीवियस लाइफ टाइम हाइज एज वेल. सो ओवरऑल वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप एंड डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए. Sir, I'm holding 10 shares of DMart at 3838.39. What to do? डीमार्ट एक वीकनेस है. एज ऑफ नाउ 3630 चल रहा है. सो लास्ट वीक हमने देखा था गैप अप ओपनिंग था 15% का. उसके बाद स्लो एंड स्टडी वापस स्टॉक इज इरेज ऑल द गेन्स. सो टेक्निकली वीक सेटअप है. थोड़े इसको 100 का. सो 3800 आसपास लुक फॉर एग्जिटिंग ऑन द बाउंस. I can see many people have joined in the session, so I'd like to take this opportunity to announce once again. Today at 4 p.m. we have a session on option strategies. अगर आपको experts से option strategies सीखनी है तो 4 बजे join करें Stockholm. And tomorrow in Gujarati language we'll be doing a session on candlesticks. So you can join tomorrow at 11 a.m. to learn candlesticks in Gujarati. And today we'll be covering the session in Hindi and English. So we'll take 2 to 3 more queries. Triveni, your view on Triveni? त्रिवेणी इंजीनियरिंग. Yes sir. एज ऑफ नाउ त्रिवेणी वीक सेटअप है, इसको अवॉइड करना चाहिए. और स्लो एंड स्टडी स्टॉक कैन टेस्ट 360 लेवल्स ऑन द डाउन साइड. सो वीक सेटअप अवॉइड. Sir, AU Bank? AU Bank better placed as of now. Stock is on the verge of giving a range breakout. So technically strong setup है. अगर 605 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो स्टॉक is potential to test 630. 640 के लिए होल्ड रखना चाहिए. So your view on Wipro? This is more like a rapid fire Q&A. So Wipro ओवरऑल सेटअप अच्छा है, बट और थोड़ा डिप आ सकता है. सो बाय नियर 270. अभी 282 के आसपास चल रहा है. सो 270 के आसपास बाय करना चाहिए. Sir, Utkarsh Finance? Avoid weak setup, very weak. TCS?
होल्ड। टीसीएस ओवरऑल नंबर्स के बाद गैप अप ओपनिंग था, बट लास्ट 2-3 दिन में हमने देखा है कि वापस सेम लेवल्स पे आ गया, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ है 200 डमा के आसपास है, सो इसको होल्ड रखना चाहिए। 4000 का सपोर्ट है। Sir, this would be the last query. Mannapuram, short term and mid term view. सो मनापुरम स्टॉक का सेटअप बहुत ही अच्छा है, ऑन द वर्ज ऑफ रेंज ब्रेकआउट है। अगर इमीडिएट में 194 के ऊपर सरपास करता है तो स्टॉक हैज पोटेंशियल टू टेस्ट 2010 ऑन द अपसाइड। और अगर बड़े व्यू की बात करें तो स्लो एंड स्टडी स्टॉक कैन टेस्ट 220 225 एज वेल। सो ओवरऑल सेटअप बहुत ही अच्छा है। नीचे में सपोर्ट जो है वो 180 का है, सो 180 के सपोर्ट से होल्ड रखना चाहिए। 210 का इमीडिएट में टारगेट है, और अगर मिड टर्म व्यू देखेंगे तो 230 भी जा सकता है स्टॉक। एंड आई लाइक टू सम अप वंस अगेन। सो सेक्टर्स की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ सब सेक्टर्स में पेन था। लास्ट 2-3 वीक हमने देखा कि मार्केट निफ्टी ऑल्सो गिव अ ब्रेकडाउन और 1000 पॉइंट का करेक्शन देखा था, फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स। ओनली सेलेक्टिव एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी थीम इज होल्डिंग वेल, जैसे मैंने आपको बताया। सो एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी थीम में सीडीएसएल, बीएससी, एमसीएक्स, कैम्स, केन्स, ये सब स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। और ahead of the budget we can focus on defense as well, so defense will be in focus, and even selective fertilizer stocks will be in focus. So yes, as of now overall market setup looks weak, but इतने अच्छे खासे फॉल के बाद अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन क्वालिटी स्टॉक। सो यस, जो ये फॉल है वो दैट इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू अनुज। थैंक यू पीयूष सर, आपकी स्पीड 5G से भी तेज है। पीयूष सर की कैपेसिटी 30 मिनट्स 200 charts, नाइस एक्सप्लेनेशन, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज नोट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फ्राइडे, एवरी फ्राइडे 4 PM देयर विल बी वन नॉलेज सेशन। इस हफ्ते और अगले हफ्ते अर्पित सर के साथ है हमारा ऑप्शन स्ट्रेटजीज पार्ट 1 पार्ट 2, देन वी हैव अ सेशन विद शिवांगी मैम फॉर डिकोडिंग डेरिवेटिव्स। इस महीने के हमारे ये 3 सेशंस हैं। नेक्स्ट मंथ वी हैव सेशन विद 2 न्यू experts and Ashish Jodia sir. After that, in the month of March, you will be seeing Dave sir and Piyush sir also. So we are planning a lot of things for you all. Stay tuned and bring in your friends and family. Thank you, everyone. Thank you. Happy weekend to one and all. Yeah.